Assalamu alaikum. Next is the renal and circulatory effects of the aldosterone or the physiological functions of the mineralocorticoid. Aldosterone is the most important mineralocorticoid. Mostly we discuss aldosterone and when we are discussing the mineralocorticoid. Aldosterone increases the absorption of the sodium and simultaneously increases the secretion of the potassium by the renal tubular epithelial cells, especially in the principal cells of the collecting ducts. Principal cells are involved in the maintenance of the ionic concentrations in renal tubules and to lesser extent in the distal tubule and the collecting ducts. Therefore, more aldosterone causes sodium to be conserved in the extracellular fluid while increasing potassium in the urine. So, if the concentration of aldosterone increases in body, it leads to the loss of the potassium from the body and more conservation of sodium in the body. A high concentration of aldosterone in the plasma can transiently decrease the sodium loss into the urine to as little as few milliequivalents a day. At the same time, potassium loss into the urine increases several folds. Therefore, the net effect of the excess aldosterone in the plasma is to increase the total quantity of sodium in the extracellular fluid while decreasing the potassium. Next is although aldosterone has a potent effect in decreasing the loss of the sodium from the body or the removal of sodium ions from the body, but in actual it has very less effect due to the absorption of water through the process of the osmosis. Actually, when potassium is absorbed from the extracellular fluid into the cells, actually water moves along with it with the process of the osmosis, and it increases the thirst. When the thirst is increased, person drinks more water, and due to more water, the dilution occurs in the body, and there will be a very less fluid volume. There will be very less change in sodium concentration in the body due to increasing in fluid volume. Okay, next is the aldosterone is also involved in increasing the arterial pressure of the body. The increase in the arterial pressure then increases kidney excretion of both salt and water called the pressure natriuresis and the pressure diuresis respectively. Removal of salt is known as pressure natriuresis, and removal of water from the body is known as pressure diuresis. Conversely, when aldosterone secretion becomes zero, large amount of salts are lost in the urine, not only diminishing the sodium of the amount of sodium chloride in the extracellular fluid, but also decreasing the extracellular fluid volume. This result is the severe extracellular dehydration and low blood volume, leading to circulatory shock. Without therapy, this usually causes death within a few days after the adrenal gland suddenly stop secretions. Excess aldosterone causes hypokalemia and muscle weakness. Too little aldosterone causes hyperkalemia and cardiac toxicity. Hypokalemia is known as less amount of potassium than optimum, यानी नॉर्मल से पोटाशियम कंसंट्रेशन कम होना, और हाइपरकैलेमिया कहते हैं नॉर्मल से पोटाशियम कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाना. इसमें भी वही बात रिपीट हो रही है. एक्सेस एल्डोस्टेरॉन नॉट ओनली काजेस द लॉस ऑफ द पोटाशियम फ्रॉम द extracellular fluid into the urine, but also stimulate transport of potassium from the extracellular fluid into the cell of the
most body, thus excessive secretion of aldosterone as occur with some type of adrenal tumor may cause a serious decrease in the plasma protein potassium concentration. देखें ना, आपको पता है कि सोडियम और पोटाशियम ये नर्व इम्पल्स की जनरेशन के अंदर इम्पोर्टेंट रोल प्ले करें। तो अगर बॉडी के अंदर से हाइपर कैलीमिया की कंडीशन आ जाती है, यानी पोटाशियम कंसंट्रेशन बॉडी में ज़्यादा होना शुरू हो जाती है, तो भी प्रॉब्लम करेगा। और अगर बॉडी के अंदर पोटाशियम कंसंट्रेशन कम होना शुरू हो जाती है तो मसल वीकनेस वगैरह की कंडीशंस आपको देखने में आएंगी। अच्छा, एल्डोस्टेरॉन सिर्फ सोडियम पोटाशियम को ही नहीं इफ़ेक्ट करता। जिस वक्त पोटाशियम एब्जॉर्ब हो रहा होता है और इन रिटर्न सोडियम रिलीज़ हो रहा होता है, तो वहाँ ये उसके एक्सचेंज के अंदर हाइड्रोजन आइंस जो है, hydrogen ions in exchange it causes the secretion of hydrogen ions in exchange for the sodium in the intercalated cells of the cortical collecting tubules. कार्टिकल कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स के अंदर इंटरकलेटेड सेल्स हैं, ये सेल्स पीएच मेंटेनेंस के अंदर इन्वॉल्व हैं। तो ये सेल्स फिर रिलीज़ करते हैं हाइड्रोजन आयन को एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर, और अब जब ज़ाहिर हाइड्रोजन आयन्स रिलीज़ होने शुरू हो जाएंगे तो वहाँ पे सेल्स के अंदर आपको अल्कलाइसिस नज़र आए। Aldosterone stimulates sodium and potassium transport in the sweat glands, salivary glands, and the intestinal and the epithelial cells. एल्डोस्टेरॉन के सेम ही इफ़ेक्ट्स होते हैं स्वेट ग्लैंड्स पर, सलाइवरी ग्लैंड्स पर, क्योंकि आपको पता है स्वेट ग्लैंड्स और सलाइवरी ग्लैंड्स का आपको पढ़ाया हुआ है कि ये इन आइन में से आइंस सिक्रीट हो, जब स्वेट एवापोरेशन होती है तो भी एक्स्ट्रा आइंस वगैरह बॉडी से रिमूव होते हैं। और सलाइवा का भी आपको डिटेल में पढ़ाया था कि वहाँ पर भी सोडियम और पोटाशियम आइंस रिलीज़ और एब्जॉर्ब होते हैं ट्यूब्यूल्स के अंदर।